जय हिंद, गुड आफ्टरनून एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज्ञानम पंजाब। अज दे साडे पंजाब PCS 2024 रिविजन सीरीज़ विच तुहाडा स्वागत है जी। हाँ जी, जिहड़े भी बच्चे साडे नाल जुड़ गए ने एक बारी प्लीज़ कन्फर्म कर दो ऑडियो वीडियो बोथ क्लीयर है जी। यस गाइज, चलो ग्रेट। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून एवरीबडी। ऑल राइट, सो अज का जोड़ा साडा सैशन है इज़ ऑन इकोनॉमी पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड जो टॉपिक असी कवर करांगे जिहड़े असी MCQs लवांगे दैट विल बी बेस्ड ऑन टैक्सेशन पार्ट, है ना। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, then different other bodies related to taxes, then very importantly GST। ये जिहड़े भी टॉपिक्स ने which fall under the taxation domain, on these topics we are going to take MCQs in today's session। हाँ जी बच्चे, चलो मैं उम्मीद करदा आवाज़ जिहड़ी है तो वीडियो दोए क्लीयर ने तुहाडे वल, तुहानूं सही तरीके नाल चंगे तरीके नाल पहुंच रही आवाज़ भी। ऑल राइट जी, चलो स्टार्ट करते हैं फिर अज दा सैशन। साडा पहला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट की कह रही है, विवाद से विश्वास स्कीम 2024 कवर्स अपील्स, रिट पिटिशंस एंड स्पेशल लीव पिटिशंस। दूजा, cases including those involving searches, prosecutions and undisclosed foreign income are covered under VSV 2.0, that is Vivad Se Vishwas Scheme 2024। So select the answer using the codes given below and please be sure you need to mark the correct statements। हाँ जी, ट्रंप शर्मा जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी। हाँ जी, जो भी लाइव ने साडे नाल, आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज मार्क योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। हाँ जी बच्चे, देखो जिहड़ी पहली स्टेटमेंट है इत्थे एक एक करके डिस्कस करते हैं। हुणे यू मस्ट हैव हर्ड दैट विवाद से विश्वास स्कीम जिहड़ी है, this was earlier also notified by the central government and now it has again, it's a second part, you can say second version by the name of Vivad Se Vishwas 2.0 has been notified, है ना, by the government। किस किस मंशा नाल या किहड़े लॉजिक दे तुसी कह सकते हो तहत इस स्कीम नूं सरकार ने दोबारा लॉन्च किया है। बई जिहड़ा भी टैक्स पेयर्स दे नाल लिटिगेशन है, कोई भी टैक्स डिस्प्यूट है जिथे पैसा फसिया होया है, उत्थे लिटिगेशन च टाइम भी जाता है, एनर्जी भी जाती है, एंड द मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंटली द मनी इज़ स्टक। सिंस द मनी रिमेन्स स्टक देयर, it is, you know, of no use. It is of no use. Neither the government is able to fetch that money in tax revenue receipts, nor the other party is able to use that money for their investment or other purposes। तो बई तुक की बनता है या फिर कह लो समझदारी वाली गल की है कि बई इस जिहड़ी भी लिटिगेशन है या डिस्प्यूट है उन्होंने खत्म किया जाए एंड उस पैसे नूं जिहड़ा है सरकार एक तरीके नाल जिन्ना भी बनता टैक्स एक आपस में रजामंदी करके समझौता करके जिहड़ा है जिस भी पार्टी नाल लिटिगेशन हुई हुई है तो उस मुद्दे नूं सुलटान दी करी है ना। लेट्स गेट द डिस्प्यूट रिजॉल्वड। तो तां करके नाम भी किद्दां रखिया, विवाद से विश्वास, यानी यू कैन से फ्रॉम डिस्प्यूट टूवर्ड्स रेजोल्यूशन एंड ट्रस्ट फ्रॉम ऑन द अदर पार्टी, है ना। So first statement, it covers appeals, writ petitions, special leave petitions, yes absolutely fine, it is correct। दूजा जिहड़ा हैगा, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ which involve searches, prosecutions, undisclosed foreign income, these have not been included। देखो थोड़ी कॉमन सेंस लाने की भी थोड़ी लोड़ है इत्थे, जरूरी नहीं है पेपर च तुहानूं हर स्टेटमेंट पता ही होएगी शोर शॉर्ट, बट यू नीड टू अप्लाई सम कॉमन सेंस, सम लॉजिक फ्रॉम योर साइड एज वेल। सो इत्थे लॉजिक की बनता है कि देखो सिंपल जी गल है, जिथे कोई भी सर्च, कोई भी इदा सीजर्स इनवॉल्व ने या कोई अनडिस्कलोज्ड फॉरन इनकम हैगी है, जिथे कोई इन्वेस्टिगेटिव एंगल भी बन रहा है, उत्थे सरकार नहीं तुहानूं अलाउ करेगी कि तुसी आके जी है ना वी विल ट्रस्ट यू एंड यू चलो इस डिस्प्यूट नूं रिजॉल्व करते हैं। उत्थे इदां दा कोई सिस्टम बनदा लॉजिकली भी सानूं लगदा नहीं है कि इदां होएगा, है ना। सो दैट वुड मीन सेकंड विल बी इनकरैक्ट। तो सवाल ने पूछा सी करैक्ट किहड़ी है, तो ओनली फर्स्ट इज करैक्ट, सेकंड इज इनकरैक्ट, हैंस आंसर बिकम्स ओनली 1। ठीक है बच्चे, आई होप समझ लग गया। चलो जी ग्रेट, सो लेट्स मूव अहेड। So under VSV 2.0, cases are excluded from eligibility if they are including any kind of searches, prosecutions and undisclosed foreign income। ठीक है, चलो let's move to question number 2। Consider the following statements: generation of revenue that would be utilized for public welfare। Second, ensure
ensure equity among different sections of society, and third, an important anti-inflationary tool. So these are three statements, and the question asks you which of the above are the objectives of taxation in India. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ 1 and 3 2 and 3 1 and 2 ਜਾਂ ਫਿਰ 1 2 and 3 ਆਲਰਾਈਟ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਫ what are the objectives of taxation. So when we talk of objectives of taxation, we are trying to boost economic growth, we are trying to promote equitable distribution of resources, concentration of wealth na hoਵੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, and anti-inflationary tool also, that is to maintain what you call in general words price stability. Maintaining price stability is also one of the objectives of taxation, right, under the fiscal policy. So what we will say is that generation of revenue which would be utilized for public welfare, yes. Second, ensure equity, absolutely, why not, है ना? You also read it under one of the DPSPs in polity. And third, an important anti-inflationary tool, yes, that is also one of the objectives of taxation. So that would mean all three have to be included. Answer becomes option D. ठीक है बच्चे, चलो, I believe this is understood and clear. Moving to question number 3. Which of the following statements is or are correct regarding the canons of taxation? हाँ जी, ध्यान नाल देखो जी. पहला, canon of certainty says that the tax individual is bound to pay ought not to be arbitrary. Second, every tax ought to be so contrived as to take out the pockets as little as possible is referred as canon of economy. हाँ जी, so you are supposed to mark the correct statements. हाँ जी बच्चे, शाबाश. जो भी लाइव ने साडे नाल, I would request all of you please mark your answers in the comment box. All right, so let's take statements one by one. देखो पहली statement, पहला तो ये गल समझो इत्थे कि we have an economist by the name of Adam Smith. Adam Smith has given basically 4 what you call canons of taxation, in which Adam says that, you know, whenever the government is trying to tax people, there must be certain characteristics which he refers to as the canons of taxation. What he says is that it should be convenient for the people to pay the tax. Whatever tax you are levying on the people must be there must be some certainty over it. ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ arbitrarily ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ tax ਲਾਤਾ. It should not be like that. Plus, you should spend as less amount of money as possible in the collection of that tax. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ tax ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਪਰੇਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਅਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਟ ਮਸਟ ਬੀ ਕੈਪਟ ਐਟ ਅ ਮਿਨੀਮਮ. ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ 1 ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 1.5 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ. ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ. ਬੈਡ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 4 ਕੈਨਨਸ ਆਫ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੇ. सर्टेनिटी की कहता है इंडिविजुअल इज बाउंड टू पे ought not to be arbitrary, सर्टेन होना चाहिए. दूजा, ਉਹਦੀ ਪੋਕਟ ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਪਲੇਸਿੰਗ unnecessary burden on the person. So that is canon of economy. So both the statements are correct here. Answer would be both 1 and 2. Option C would be the answer. Chalo ji. Let's move to question number 4. Which of the following statements are incorrect? Pehla, an ad valorem tax is a tax based on value of commodity or property. Second, a common example of ad valorem tax is property tax levied on real estate. So you are supposed to choose the incorrect statements. हाँ जी बच्चे, देखो जो भी लाइव ने, I would request
कमेंट बॉक्स च आके प्लीज़ मेक श्योर यू मार्क दी आंसर्स। देखो लाइव सैशन च आने का फायदा ताई है जे तुसी इंटरैक्ट भी करो, है ना। चलो देखो इत्थे जिहड़ी गल हो रही है, we talk of two types of taxes. One we say are in the nature of being a specific tax. दूजा we say is an ad valorem tax. Ad valorem basically is a phrase from Latin which talks or which says on value added or value addition, right? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਐਸ ਸੱਚ ਪੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰੇਜ਼ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਟਿਨ ਚੋਂ। ਸੋ what it says is based on the value of commodity or property, right? So first you can say is the definition itself. ਦੂਜਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, डिपेंड करेगा भाई जिन प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कितनी है, मान लो 50 लाख रुपए है, करोड़ रुपए है, 2 करोड़ रुपए है, एटसैट्रा। तो प्रॉपर्टी वाला जो टैक्स है उन्होंने कहने कि भी वो एड वैलोरम टैक्स का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, समझ रहे हो गल नूं। सो दैट वुड मीन सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पूछा क्वेश्चन सीगा इनकरेक्ट, हेंस आंसर बिकम्स नाइदर वन नॉर टू। ठीक है बच्चे, आई होप आई बिलीव ये समझ लग गया। चलो, so moving to question number 5. All right, GST the regarding question है, GST is a comprehensive multi-stage tax that is levied on every value addition. Second, GST is a destination based consumption tax. And third, IGST, that is integrated GST, is collected by central government for interstate sale. All right, so you are supposed to mark the correct statements, or in fact this is a different pattern. Question wants you to mark how many of these statements is or are correct, only one, only two, all three, or none. हाँ जी बच्चे, की लगता थानू की आंसर आएगा इहदा? All right, so let's take a look at these statements individually one by one. See, when we talk of the first statement which says goods and services tax is a comprehensive multi-stage tax levied on every value addition. Yes, we know that on every stage, whatever value is added, GST is levied on that value added, है ना। ताई करके असी कहने हैं कि GST जड़ा है it eliminates any type of cascading effect. It eliminates any type of cascading. So first statement is absolutely fine, it's correct. Second statement, it is a destination based consumption tax. ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? स्टेटमेंट ਤਾਂ correct ਹੈ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, but ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੰਨ ਲਓ let's say for example हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ we are producing let's say a car, but that car is being sold in the state of Punjab. So this is interstate sale, of course it is interstate sale, but the consumption state is Punjab, hence the tax amount of GST will not go to Haryana, it will go to Punjab. Getting my point? This मतलब कि यार destination, it is not a source based tax. Source based tax नहीं हैगा, it is a destination based tax, which means the state which is consuming, which is the destination state, is actually getting the tax money. So इत्थे second will also be correct. Third, IGST, integrated GST, is collected by central government for interstate sale, absolutely correct, and then the central government will give that money to the destination state or the consumption state, right? So all the three tend to be correct only, and hence answer would be all three are correct. Question I asked you, how many of these are correct? All three are correct, which would mean answer becomes option C, right? I hope that is understood. चलो वधदे अगले सवाल ते। छठा क्वेश्चन की कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इक्वलाइजेशन लेवी was introduced on the recommendations of Raghuram Rajan committee. Second, equalization levy is a tax imposed on specified digital services provided by non-resident companies to Indian residents or businesses.
So you are supposed to tell which of these is or are correct. Yes, guys. देखो बच्चे, इत्थे equalization levy or it is also famously called across the world as Google tax जे तुसी सुनिया होवे. ठीक है. If you're preparing sincerely, you must have come across this term as well. देखो, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ equalization levy, also known as Google tax, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਗੂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ non resident company. It does not have headquarters here. It is a non-resident company, right? But it is making profits from our country. It is operating here. It is making profits. So government came up with equalization levy. That is, it will have to pay certain amount of tax. ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਗੂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ABC ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ABC ਕੰਪਨੀ ਇਜ਼ ਪੇਇੰਗ ਸਰਟਨ ਫੀਸ ਟੂ ਗੂਗਲ. ਸੋ ਵਾਈਲ ABC ਕੰਪਨੀ ਵਿਲ ਪੇ that ਫੀਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੇਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਨੀ ਨੂੰ ABC ਕੰਪਨੀ ਡਿਡਕਟ ਕਰ ਲਏਗੀ. ਉਹ ਮਨੀ ਡਿਡਕਟ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰੇਗੀ ਐਂਡ that money will go to the government as equalization levy. Getting this point? So that is the definition, or that is what is called as equalization levy or globally as Google tax. ठीक है, चलो दूसरी स्टेटमेंट की है. अच्छा, पहली तो करेक्ट होगी, नहीं पहली, आई एम सॉरी, पहली करेक्ट नहीं हुई, पहली गलत होगी. इट वाज नॉट रघुराम राजन, ठीक है, इट वाज अखिल रंजन कमेटी. कमेटी इत्थे गलत आ, पहली गलत है. दूजी इज एक्चुअली करेक्ट, सेकंड इज एक्चुअली करेक्ट. सेकंड इज बेसिकली the definition of equalization levy or what is also globally called as Google tax. ठीक है, इनू ऐड कर लो अपने नोट्स जे तुसी नहीं हाल तक सुनी सी इस टर्म, if you have still not heard this term, right? All right, coming to the answer, correct पूछा सी, only second is correct, answer becomes option B. ठीक है, so it was not Raghuram Rajan committee, rather it was Akhil Ranjan committee. ठीक है बच्चे, चलो let's move ahead. Question number 7, consider the following statements. हाँ जी, now it is on Tobin tax and angel tax. देखो ध्यान नाल की कह रहा है क्वेश्चन. पहला, it was originally defined as a tax on all spot conversions of one currency into another. Second, angel tax refers to the income tax payable on the funds raised by unlisted companies from angel investors. हाँ जी बच्चे, and you are supposed to mark the incorrect statements. Please be very clear. All right जी, let's wait for 10 seconds. All right, let's take the first statement. देखो, Tobin tax जिहड़ा tax है, this was levied to stop or to, you can say, prevent any kind of speculation in the forex market, which basically means all on spot conversions of one currency into another, specifically for the purposes of speculation. ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट जी है वो एक तरीके नाल कह लो टोबिन टैक्स ਨੂੰ डिफाइन नहीं कर रही है. दूजा, एंजल टैक्स refers to income tax payable on the funds raised by unlisted companies from angel investors. angel investor ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫॉर एग्जांपल ਲੈਟਸ ਸੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ कह लो कि मुकम्मल बंदा याद आ रहे थे, दैट इज़ द लेट श्री रतन टाटा जी. सो जिमें कोई भी बंदा आइडिया लैके गया या किसी बंदे ने कोई मान लो ऑन्टरप्रनोरल एक्टिविटी कोई कंपनी स्टार्ट की, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਨੈਟ ਵਰਥ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਆਫ ਲੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਆਲਸੋ. ਸੋ ਹੀ ਵੁੱਡ ਆਫਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ दैट ਕੰਪਨੀ, ਉਹ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ. ਕਾइंड ऑफ यू कैन से एन एंजल इन्वेस्टर. सो ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ एंजल टैक्स. ठीक है,
So first and second both are correct here, and question ने पूछा किसी incorrect, hence answer becomes neither one nor two or none of the above. ठीक है बच्चे, चलो, so that means answer becomes option D for question number 7. चलो let's move ahead, बढ़ते हैं अगले question पे. हाँ जी, which committee is credited with the construction of GST model of India? So you have 4 options. पहला की कह रहे हैं असीम दासगुप्ता, विजय केलकर, सी रंगाराजन या फिर नन ऑफ द अबव. हाँ जी बच्चे. So this is a one liner, not much difficult. So we all know it was the Vijay Kelkar committee which is credited with the construction of the GST model in India, है ना. चलो let's move ahead. Question number 9. Which of the following is or are correct? पहला, when a tax is buoyant, its revenue increases without increasing the tax rate. Second, the tax rates above a certain threshold reduce tax revenue is a phenomena argued by the Phillips curve. And you are supposed to mark the correct statements. दोए concept ने basically economics ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ taxation ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ दोए concepts ਨੂੰ, and I believe you will be able to answer this question number 9. देखो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ buoyant ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ that without increasing the tax the revenue collected in that tax is increasing. कि टैक्स ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ let's say example ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ that is let's say 6%. now without increasing the tax ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ increase ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. without increasing the tax rate, what revenue the government or what amount of money the government was getting in this tax that has increased. ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ that the tax is buoyant. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਬਈ GDP ਇਨਕਮ ਵਧੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਚੇਂਜਸ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਟੈਕਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ buoyant ਹੈ. ਦੂਜਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਗੀ. ਦੂਜੀ, tax rates above a certain threshold reduce tax revenue is a phenomena argued by the Phillips curve. So this is incorrect. Now you please comment and tell me why is this incorrect. Statement 2 is incorrect. ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਥਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਬਟ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, बट इट इज़ इनकरेक्ट, है ना. चलो आई होप तुसी कमेंट करता होगा हाल तक, बट दिस इज़ नॉट आर्ग्यूड बाय द फिलिप्स कर्व. दिस इज़ समथिंग विच इज़ आर्ग्यूड बाय द कर्व गिवन बाय इकोनॉमिस्ट आर्थर लैफर, एंड वी कॉल द कर्व एज लैफर कर्व, विच वुड मीन आंसर विल बी ऑप्शन बी. क्वेश्चन ने पूछा करेक्ट, आई एम सॉरी टू से आंसर विल बी ऑप्शन ए नॉट बी. आंसर विल बी ऑप्शन ए. करेक्ट पूछा सी, पहला करेक्ट है, दूजा इनकरेक्ट है. सो दिस इज बेसिकली लैफर कर्व. ठीक है जी, चलो. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए. ओनली वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट. ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्ट. पहला, excise duty was a tax that used to be levied on goods for their production, licensing and sale in India. Second, excise duty for most products has been replaced by central GST. हाँ जी बच्चे, चलो शाबाश, फटाफट आंसर मार्क करके दसो. ऑल राइट, चलो आई विल वेट फॉर सम सेकेंड्स. हाँ जी, की लगता थानू जी की आंसर होएगा दा आखिरी सवाल दा. हाँ जी बच्चे, देखो एक एक करके देखते हैं. जी पहली स्टेटमेंट है वो की कह रही है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज आस्किंग दैट एक्साइज ड्यूटी was levied for production. Yes, we know that excise duty was, it was levied or it was charged on
manufacturing, you can say that. So first is correct. Second, most products ਲਈ excise duty now is under the central GST, है ना. ਜਿਵੇਂ alcohol ਹੋ ਗਿਆ, liquor ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ you have excise duty which is, you know, separately charged by the central government and in some cases by the state governments also. But otherwise for most of the products it has been replaced by central GST. So that means both these statements are correct. And you were supposed to mark the incorrect statements, which would be neither one nor two. Answer becomes option D. ठीक है बच्चे, I hope it is understood. समझ लग गया सारे ਨੂੰ, है ना. So that is all for today and thank you so much for tuning in. बस ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ. ਪਲੱਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਆਲ ਦ ਕੰਟੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ PDF ਫਾਈਲਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੋ ਟੂ ਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਫੈਚ ਆਲ ਦ ਕੰਟੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਹੈ ਨਾ. ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ. ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਧਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ. ਚਲੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ ਸੈਸ਼ਨ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਿਊ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ. ਜੈ ਪੰਜਾਬ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ.